ओके, सो पोलैंड टू स्टॉकहोम की आइटनरी। बहुत लोगों ने एक्चुअली मुझसे पूछा कि पोलैंड से स्टॉकहोम की जो रीसेंट अभी ट्रैवल करी हम लोगों ने, उसकी आइटनरी कैसे प्लान करी हम लोगों ने, कैसे शिप बुक करी, आई मीन क्रूज़ कैसे बुक किया और कैसे फ़्लाइट बुक करी, कौन से पोर्ट से शिप हमें लेनी है, कौन से पोर्ट से हमें बाहर आना है, जब वापस में आएँगे, ट्रेन एंड ऑल दोज़ एक्सपेंसेस, और कैसे ये एक अफोर्डेबल ट्रिप हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो थी ना वो काफ़ी ट्रिकी होती हैं। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी। एक्चुअली मैं बहुत रिसर्च करता हूँ जब भी मैं कोई ट्रैवल प्लान करता हूँ। आई नो लाइक ट्रैवल इज़ समथिंग व्हिच आई लव टू डू दैट, बट स्मार्टली। I decided to share that, the complete information about the Stockholm, I mean Sweden and Poland trip. So we'll start with this. हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने भी हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इफ़ यू थिंक देन दे आर मीनिंगफुल टू यू। और कैसे प्लान करनी है ट्रिप, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो ऑफ कोर्स फ्लाइट के लिए स्काई स्कैनर ऑलवेज देयर। व्हेन इट कम्स टू बॉल फेरीज विच इज़ अ शिप कंपनी, जो कि जहाँ से भी आप जाके क्रूज के शिप्स बुक करा सकते हो। यहाँ से आप पोलैंड से एक्चुअली नॉर्डिक कंट्रीज़ में डेनमार्क और स्वीडन, ये जो 2 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो वाया शिप। स्वीडन जो है वो थोड़ा-सा लॉन्ग जर्नी है। इट मीन्स लाइक इट टेक्स अराउंड 18 आवर्स क्रूज़ सेलिंग टाइम। But when it comes to Denmark, it is very short journey. It's around 7 hours. So when you're planning something big, for example, Sweden or Stockholm, what you can do, I would suggest, is like you can take a cabin into the ship, your own cabin where you can sleep, relax. You can book your all lunch and dinner via online, portal in advance. You can save definitely a good amount of money because they give you a good discount and many more other attractive offers. Like in the cruise, everything is there. Like there is a mall, there are the uh, restaurants, bar. You can do the dance. There are clubs as well. There are many places where kids can play, kids area, swimming pool, and all that. Like you could all enjoy all this thing. When it comes to total budget, I'll explain you in detail. मैं अभी वेबसाइट्स में जा करके मैं कैसे क्या बुक करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देखोगे। But when it comes to total budget, it will be very surprised because based on what research I have done, you see here flight charges are very cheap. It is a lot easier if you're booking flights in advance. I would always suggest कि आप फ्लाइट एडवांस में बुक करें। कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम तो लेके चलो, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। Then cruise is like 156 zlotys, which is ticket only. But if you want to book your cabin, you can pay some more bucks there and then can pay for your foods and all that. You can bring your car, bike, many more things in the cruise because they always, provide those support for that. So yeah, that's pretty much all. Let's go to the another, I would say, demo booking and those things where I'll explain you everything in detail, what and how, which way you should plan. So thank you very much. Let's see that part next. तो ये है हमारा चैनल रंगोली की रंग। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ इसको सर्च करके आप प्लीज़ हमारे वीडियोस देखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बिकॉज़ हमारा प्लान यही है कि हम जितनी ज़्यादा ट्रैवल इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ उतनी ज़्यादा शेयर करेंगे। एटलीस्ट पोलैंड और यूरोप में जहाँ जहाँ पे हम घूमने जाएंगे। हमारे पास कंटेंट बहुत है शेयर करने के लिए। हमने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ट्रिप्स प्लान करी हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि हमारे और बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हाउ यू कैन प्लान एन अफोर्डेबल ट्रिप टू डिफरेंट कंट्रीज़, नॉर्डिक, इटली, ग्रीस एंड मैनी अदर प्लेसेस इन सेंट्रल यूरोप। मैंने एक्सपेक्ट किया आपको उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप कैसे ट्रैवल प्लान करोगे अपना वो, और कैसे आइटनरी बनाओगे, हाउ यू कैन सेव सम बक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉल फेरीज। polferries.pl ये पोलैंड की एक बहुत बड़ी शिपमेंट कंपनी है एंड इट्स देयर आई थिंक क्वाइट लॉन्ग, मे बी मोर देन 60 ईयर्स। मैंने हिस्ट्री चेक नहीं करी है बट हाँ मुझे लग रहा है कि बहुत पुरानी कंपनी है। बट रिसेंटली इनके बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि आप यू कैन कन्वर्ट दिस वेबसाइट इन इंग्लिश इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइक स्वीडिश लैंग्वेज भी है,
बिकॉज आपको ये वेबसाइट जो है यहाँ से बुकिंग यू कैन डू इट फॉर डेनमार्क एज वेल एज फॉर स्वीडन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ लैंग्वेज कंपैटिबल, पॉलिश, स्वीडिश, डैनिश और जर्मन language as well. So for example, let's say when you're planning to go to Sweden, so Gdansk is the port which is in Poland that you have to take your journey, you have to start your journey from, and then Nishman is the port which is in Sweden. It is around 18 hours long cruise ship. So make sure कि अगर आप लंबा प्लान कर सकते हो and you do not have any sea sickness, then ये प्लान करें. So for example, let's say I will show you how will it cost. So 8 दिसंबर की डेट डालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि what will be the price that comes out to be. So you see here, this is the page where you can select different offers. So for example, this is the place where you will see like how many persons, if you have a car and all those things. When it comes to child 7 years, it's free of cost. So make sure ki when you have child, please like assume that you do not have to pay anything if it is smaller than 7 years. When it comes to adults, so this is the place where you can put number of adults. So maximum you can put 9 adults at a time, and then you can go and book another ticket. So that is for the adult page. When you go for a family like adult and child, so you have to only pay for adults. Sometimes what happens when you book, you can also see here options. You want your for example, let's say you have car, right, and you want to take your car with you. So in that case you can take car, and you just need to pay for that. Now this is the place where you can take for example cabins. So suppose आप फैमिली में जा रहे हो, आपको लगता है कि you have to purchase a cabin, long journey है, you have to sleep. So in that case let's say a family, for example 2 adults or 1 child लेके चलते हैं. Now you go to the cabin section, and there when we see here like place in a 2-person cabin with a window, I mean without window. So these are the places which are actually kind of shared, right? These are not private. So let's say you are only 2, okay, and you want to share a place in a cabin. So you can take that particular cabin separate, and then there are other places like places in 4-person cabins. You can take 1 adult, you can share that among. So in short, ये सारे कैबिन्स ऊपर जो दे रखे हैं, इसमें आप अगर शेयर करोगे तो इसमें आपके साथ में उस कैबिन में कोई और भी होगा, would be some stranger. So that is important thing to understand कि जो ऊपर के टॉप वाले हैं ये shareable cabins हैं. If you want to take your dedicated cabin so you have to select something which is down, where you will get your dedicated own cabin. So for example 4-person cabin without a window, with window. So without a window is kind of with a bit cheaper price. With window it's a bit more price, because of course आपको व्यू अच्छा मिलेगा. तो या दैट्स प्रीटी मच. आप ध्यान रखो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है. फॉर एग्जांपल हमने विद विंडो लिया है, तो उसका प्राइस आपको दिख रहा होगा कितना ऐड हुआ है. फूड इज़ समथिंग दैट यू कैन ऐड, एज आई ऑलवेज सेड, इफ़ यू बुक इट ऑनलाइन and you will definitely get some discount, but if you go and purchase food vouchers there, it will be a bit I would say it is possible, yes, of course, but so 917 is the zloty for a family of 3. You can see here, which includes your cabin, meaning you can save some bucks of your hotel, plus your sail trip 18 hours, plus a little bit food. तो आई थिंक इट्स अ गुड डील, बिकॉज आपके होटल के पैसे भी बच रहे हैं. इट्स अ गुड डील बिकॉज आप सी से ट्रैवल भी कर रहे हो. सो not a bad price. So that is why I would always suggest कि if you plan your trip in a good way, it's always going to be very fruitful. Now when it comes to flight, I think it's pretty straightforward. Most of us, they already know that skyscanner.net or whatever sites you open, you can select different ways of getting and seeing those affordable price at very prices.
So I usually go and select the whole month, whichever month I'm planning my trip. So that way I always get which day is the the cheapest day fare. So for example, let's say December. So when I select this and I go and choose and just say for a family, so over here let me put 2 here and 1 at a kid and then 7 years, and let me click search. So if you see here, like there you will see all the prices for 1 month December, and you can easily decide like which day is very cheaper. So I would say always check the prices. For example, maybe 84 zlotys that you see here, you might get a good deal if you come from Stockholm to Krakow, maybe some other way around, right? So let's say you get a good deal over there, you just take ticket from there and go via ship from Poland to Stockholm, or let's say vice versa. That can be also possibility, like you go from Poland to Stockholm and then come from Stockholm to Poland by ship. So these are some permutation and combination that you can play around when you're planning such trip. I would say these are the small tricks, but yeah, good. So I will suggest you to watch all our videos, and if you like it, as I said, please subscribe the channel and please like the video and share the video with other. So let me share you like how, because it is also very important when you take your ship. So for example, in this case, when we took the ship from Stockholm, Nishman port, so how it is possible to get from Stockholm to the port which takes the ship to Poland. I always love this Rome to Rio side because it's always give you many options how to reach from one place to other place. So you see it's very good option, like you have 16 zlotys, the ticket for the train, and you can take the ticket and it directly take you from the Stockholm, the main central railway station, to the port. You can also watch my video how the station look like central station Stockholm city, and it is very interesting. People who are, let's say, coming from Gdansk or going to Gdansk in Poland, I would say intercity.pl. This is the best site. I would say this is the good site to find any train inside Poland. Also international trains. I will share another blog where I will show you how to get deals using intercity.pl. Till then, thank you for watching.